निर्णय 2024। Good evening, listeners. Welcome to our ongoing series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Sonu Sood with my co-anchor Umesh Chaturvedi. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव संबंधी समाचारों के साथ साथ कई मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मतदाता जागरूकता पर भी बात करेंगे। इसके लिए हम स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ के साथ साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान। दीपक जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। Let's listen to the news related to the elections, but first, the headlines. Congress releases 6th list of candidates, introduces new faces for 4 seats in Rajasthan. BJP releases 5th list of 111 candidates for Lok Sabha poll. Actress Kangana Ranaut and Arun Govil will contest from Mandi and Meerut. Election Commission emphasizes on sustainable elections, issues directive on minimal paper usage. लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की छठी सूची जारी की। राजस्थान की 4 और तमिलनाडु की 1 सीट के उम्मीदवार घोषित। प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत और अरुण गोविल होंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। निर्वाचन आयोग का पर्यावरण अनुकूल चुनाव पर जोर, कागज के कम से कम इस्तेमाल के बारे में दिए निर्देश। And now the news updates in detail. Congress has released a list of 5 candidates for the ensuing Lok Sabha polls. Prahlad Gunjal will contest from Kota, Ramchandra Chaudhary from Ajmer, and Sudarshan Rawat from Raj Samand constituencies in Rajasthan. The party has fielded advocate C. Robert Bruce from Tirunelveli in Tamil Nadu. भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। पार्टी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा पुरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय और पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। रामायण सीरियल में राम की भूमिका से लोकप्रिय अभिनेता अरुण गोविल को पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जबकि उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद वरुण गांधी की पीलीभीत लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कल ही शामिल हुए नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तामलुक लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बेलगांव से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम विधानसभा के लिए 14 उम्मीदवारों की भी पहली सूची जारी की है। भाजपा के दिल्ली राम थापा, अपर बुरुतुक और नरेंद्र कुमार सुब्बा मणिबंग देनताम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। In Karnataka, the Kpp leader G. Janardhan Reddy merged his party with the Bharatiya Janata Party today and rejoined the party along with his wife Aruna Lakshmi ahead of the Lok Sabha elections. They joined the party in the presence of party leader B.S. Yediyurappa and state BJP president B.Y. Vijayendra Reddy. Mr. Reddy said that he has joined the party without any conditions and was not seeking any position. पर्यावरण अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष उपाय कर रहा है। इस सिलसिले में आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनावी मशीनरी को कागज का कम से कम उपयोग करने का निर्देश दिया है। इस बारे में सुनिए हमारे संवाददाता दिवाकर की विशेष रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा कम्युनिकेशन करने को कहा है। पर्यावरण अनुकूल चुनाव के लिए चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग से पूरी तरह से बचने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि इस चुनाव के दौरान कचरे के संग्रह की समुचित व्यवस्था की जाए। हर प्रकार के कचरे के निपटान की सुविधा भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग के अलावा चुनाव आयोग ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने और कार पूलिंग को प्रोत्साहित करने का भी आदेश जारी किया है। इसके अलावा चुनाव के दौरान कर्मियों और मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली दूरी को कम करने पर बल दिया है। राजनीतिक दलों से यह कहा गया है कि वे चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करें। Deepak ji, we'd like to know from you, the lists are being successively declared by the various parties. Can you tell us about the, emerging significance of celebrity candidates? We see that film stars, they are increasingly making inroads into politics, and this is nothing new. So how do you see this phenomenon? Well, I think the idea is to woo the voters, whether it's a actor or singers. Even in Mizoram, female singer, she is contesting the Lok Sabha election this time. The People's Conference Party has fielded a singer, Rita, her name, she will be contesting for the first time, Rita Malswamy. She is a candidate from the People's Conference Party in Mizoram. But to put things in perspective, a massive country like US, they also have had Yes. presidents who were in the acting field. It works. Yeah. Why not? दीपक जी, कंगना रनौत के बारे में तो पहले से चर्चा जी। थी। अरुण गोविल को लेकर के कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को कैंडिडेट बनाया। क्या कहेंगे आप इसको? अगर आप अरुण गोविल जी का कैरेक्टर देखें और जो उनका स्क्रीन लाइफ देखें आप, वो बहुत शांत रहे हैं राम की भूमिका में, तो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कंगना क्योंकि वो स्टेटमेंट देती रही हैं, कुछ वो क्रिटिसिज्म भी हुआ उनका, मगर वो तो बिल्कुल उस हिसाब से क्लीन इमेज वाले आदमी हैं। नहीं, लेकिन मुझे याद आता है कि जब रामायण सीरियल अपने पूरे पीक पर था, तो उस समय जो रामायण सीरियल की सीता थी, दीपिका चिखलिया, उनको भी गुजरात के ऐसे उम्मीदवार बनाया गया। वो सांसद भी रही और अरविंद त्रिवेदी जो रावण के रूप में मशहूर थे, रावण के किरदार के लिए मशहूर थे। राम को इतना देर से लाने का, और या मतलब कुछ आपको लगता है? आई थिंक मे बी इट हैज अ कनेक्शन विद द राम मंदिर। ये राम मंदिर बन गया तो राम भी जो जिन्होंने रोल अदा किया था उनको भी ले आए हैं। So Deepak ji, along with the candidates list, which is a very, very important development which everybody has their eyes on, the other thing is election manifestos. They will start coming and they'll be a big deciding factor for the voters. What all do you think are the factors which help a voter to decide when they go and cast their vote? See, the first of all, the voter wants to know what this party is going to do for him or his community or his living, better living. So वो चीज़ सबसे पहले देखी जाती है वोट करने से पहले। और दूसरा, मेरे ख्याल से बीजेपी that way has a big advantage, whether it's northeast or other states where they are ruling. See, because the development is the flagship BJP is having in this election everywhere. So the past performance, you're saying that is Yes. important. The promises made for the future are important, and also the candidates, their precedent, what they have done, is that also important? Yes, obviously. See, the thing is, if you don't have a good candidate, if you have a black sheep contesting the election, who's going to vote for him or her? So in that context, do you feel that this know your candidate facility is very, very important, which has been started this time? Yes. And I would like to add few words. You were mentioning about your reporter said about the election commission. Yeah. I give you one example of Mizoram state, where the civil society controls all the election campaigning. No poster is allowed. No candidate can go for door-to-door campaigning. They are allotted in locality, one day, one place, where one by one each candidate is given time to speak. And beyond that, they have no control they are not allowed to go to any village and use loudspeaker or put up even posters. So that way, if somebody has minimum resources, can even contest in Mizoram.
there's no expenditure. हाँ, ये बिल्कुल अनुकरणीय है, इसको तो एक मॉडल के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। जी जी, इलेक्शन कमीशन हैज अप्रिशिएटेड दिस एफर्ट एवरी टाइम जब भी इलेक्शन होता है, आप देखिए वहाँ पे। बिल्कुल अच्छी जानकारी दी आपने। एक चीज़ और है कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि पार्टियों में आना जाना बहुत बढ़ गया है। जैसे नवीन जिंदल तुरंत शामिल हुए पार्टी में, फिर उनको टिकट भी मिल गया, और कांग्रेस एक ज़माने में बड़े लीडर होते थे, बड़े स्तंभ माने जाते थे, पिलर थे। और एक और कर्नाटक से डेवलपमेंट हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले कुछ लोग जो अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, वो सब वापस आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पॉलिटिक्स जो है ये कोई अब वो सोशल कॉज नहीं रहा, इट्स बिकम अ प्रोफेशन। अब लोगों को मालूम है कि अगर आपको अपोजिशन में ही रह के पूरी जिंदगी गुजारनी है तो वो सोचना पड़ता है इनको, इसलिए वो लोग रूलिंग पार्टी में इसलिए ज्वाइन करते हैं कि शायद हमें टिकट मिलेगी तो हम दोबारा जीत जाएंगे। यही एक उनका वो है। अच्छा, इस बार एक और ट्रेंड दिखा है, या तो किसी कैंडिडेट के नाम पर विवाद हुआ, तो विवाद होने के बाद क्या हुआ कि उस खास पार्टी से, अगर किसी खास पार्टी से उसको टिकट भी मिल गया है तो उसने अपने आप ही अपना टिकट वापस कर दिया, या जिसका टिकट कट रहा है वो भी अपना नाम पहले ही वापस ले रहा है। ऐसा आप बहुत अनुभवी हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें देखिए, अब इट्स नॉट अ जनरल प्रैक्टिस, बट कभी ना कभी कुछ होता है तो जो इनको लोकल इंटरेस्ट होते हैं, लोकल बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए ये लोग करते हैं। And you just said something that politics has become professional. Taking that a little forward, the politics and politicians, they've become much more answerable in terms of, as you said earlier, development metrics, where the country is going. So all the eyes are on these metrics also, as far as the voters are concerned. Yes, obviously. And other thing is not only that, you look at the way the Modi government is functioning. They are controlling each and every ministry, monitoring each and every ministry from the PMO. So a minister cannot just give a favor or pick up a file and sign it and he can take decision on his own. No, it's a policy decision. He has to refer it to the PMO and take the clearance. And now we will go straight to Bangalore, from where our regional correspondent Sudhindra is there with us, and he will give us information regarding election, the election fever going up there. Sudhindra ji, we'd like to know from you, since Karnataka will go for polling in the second and third phase, can you give us some information about the preparations of general elections in Karnataka, and did parties declare the names of their candidates? What's the update so far? You see, Sonu, so the notification for the second phase of election will be on March 28th, and nominations will be filed from that date. So right now, training of polling personnel, sweep activities, police and excise department teams manning checkposts, and enrollment of new voters is going on in the state right now. And on the other hand, the political parties have declared most of the candidates for the 28 seats and are now engrossed in planning the election campaign. Well, talking about the candidates, Sonu, so the Congress has announced candidates on 26 seats, BJP on 24, and JDS is yet to announce its candidates for 3 seats. You know that both BJP and JDS have formed an alliance, and both the Congress and BJP have given tickets to the new incumbents in this election. Pratap Simha from Mysore and Anant Kumar Hegde from Uttara Kannada have been replaced by BJP, and Mallikarjun Kharge, Veerappa Moily and KH Muniappa, all veteran politicians from Congress, are not contesting the election this time. And from JDS, I think Deve Gowda is also not likely to contest this time, Sonu Sood. Thank you so much, Sudhendra ji. Listeners, this was Sudhendra ji, our correspondent from Bangalore, who was giving us information regarding the election fever heating up in Karnataka. We'd like to know from you, what do you feel, how much of, the pro-incumbency and anti-incumbency factors are going to play in these elections? See, the anti-incumbency factor, if you see, well, you have to overlook that when you see the development being done. The government which is delivering incumbency factor does not work there at all. I do not agree on this that, every time if somebody is completing a term, you'll say anti-incumbency factor hai. Nahi hai. It's not there. See, you deliver goods to the people, people will keep you on your seat.
And what I heard, make out from your correspondent from Bangalore, the effort is to bring youngsters. That's why the heavyweights like Deve Gowda and other names which he took, they are being replaced by the young people, young leaders. दीपक जी, आपने एक बात की ना अभी कि यंग पीपल के बारे में, इस बार 7 करोड़ नए मतदाता हैं जी, और उसमें से सब अभी न्यूली जो मतदाता बने हैं। क्या लगता है किस तरह से ये करवट बदलेगा यूं चुनाव का? मेरे ख्याल से तो ये जो है, जो यंग वोटर है, ये बहुत सेंसिटिव हैं अबाउट पॉलिटिक्स, दे अंडरस्टैंड, और ये भी मुद्दा देख के वोट करेंगे, और अपना कैंडिडेट का क्लीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दिस यंगस्टर्स जी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर द पार्टीज टू अंडरस्टैंड। ये 7 करोड़ वोटर जो है कम छोटी फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर है। And now we will go across to Agartala, from where we have our regional correspondent connecting with us. Warm welcome to you on Akashvani. Thank you so much. From you in Tripura, what is the information regarding the list of candidates declared from political parties so far? Yeah, right. So, as we know that from the BJP, from Tripura West constituency, Mr. Biplab Kumar Dev, he is the former Chief Minister of Tripura. So, he is contesting from Tripura West seat, which goes to poll on 19th of April, okay, in the first phase. And against him is the Congress candidate. He is a veteran, Congress veteran, Mr. Ashish Kumar Shah. Ashish Kumar Shah had also contested in the assembly elections against Chief Minister Dr. Manik Saha, but he was defeated by Mr. Manik Saha. So in Tripura West, this is the scenario. And apart from that, there are other independent candidates also who are filing their nomination papers since the gadget notification was issued from 20th of this month. So this is going on. And in Tripura East constituency, we have from the BJP, there is Miss Kriti Singh Dev Burma. She comes from the royal family, and against her is Rajendra Riang. He's a veteran of CPIM. CPIM has been was the stronghold of the left front since long time. But in the last election in 2019, both the seats, that is Tripura West and Tripura East, were won by BJP with a thumping majority. And that time, from the West seat, there was Pratibha Bhaumik. She is a sitting MP. Yeah. And from East, Rebati Tripura also won. But both of them were denied tickets, and new faces have been brought in by the BJP. And can you tell us a little bit about what preparations are being made by Election Commission of India? Oh yeah, Election Commission of India, when we spoke to the Chief Electoral Officer over here, so, and also the District Electoral Officer, so they have started the training programs of the micro observers and polling staff. They have also told us that all the polling stations are ready. Like only it's a matter of like few days now. On 28th, the nominations will come to close, and from there on, the electioneering will literally pick up. So as a reason, after that, like there will be very less time. So polling staff and the micro observers and other people who are related to electioneering work, their training has started, and it is going on smoothly as of now. कुणाल जी हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल कमेंटेटर दीपक दीवान जी है, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। दीपक जी। कुणाल जी, recently BJP party and the Tripura Motha party, they signed a agreement, mutual understanding. How that is going to help the BJP candidates in the election? BJP candidate, basically this is like in Tripura East constituency, where Kriti Singh Dev Burma, she's the elder sister of Tripura Motha Supremo, Mr. Pradyot Bikram Manikya Dev Burma. Yeah. So Pradyot is the one who's leading this Tripura Motha party, and they have signed an agreement with the central government, the state government. So this is a tripartite agreement wherein the
there are various nitty-gritties about it. So you mean to say this will goes in favor of the BJP candidate? This may go to some extent. This may go to BJP's favor. Yeah. Because since she comes from a royal family. Yeah. And so that's the reason why it appears as if the BJP will gain something out of it. Thank you. Yes. Thank you so much, Kunalji, for joining us and giving us this vital information. We'd like to know from you, Northeast is a very, very important, now it has been brought into the mainstream. So how do you see the elections panning out in Northeast? Yes. First of all, I must tell you, there's a lot of speculation going on, and my sources in the BJP offices have told me that they want BJP Chief Minister and Biren Singh to resign and contest the Lok Sabha poll. We still have time for the nomination. If that happens, he will resign and he will file nomination for the Manipur inner constituency. And he has been given offer to nominate the candidate of his choice for the chief ministership. That may happen tonight or tomorrow if it comes true. This is the biggest speculation because everybody is having eyes on the Manipur inner constituency. And apart from that, BJP is supporting the NDPP candidate in Nagaland because BJP has a Rajya Sabha seat. So the lone Lok Sabha seat, NDPP, is being supported by the BJP. Similarly, NPP, Conrad Sangma's party, BJP is supporting in Tura and Shillong seat. Meghalaya has 2 seats and Manipur also has 2 seats. And Tripura also, we have 2 seats. And in Mizoram, it's a very keen contest between the 5 candidates. We have Richard Vanlal Thangleaha, who is contesting from the ZPM, which is the ruling state party, Zoram People's Movement. Then we have K. Vanlal Vena. He is the MNF sitting Rajya Sabha MP who will be contesting for the Lok Sabha this time. Then Lal Biak Zama, who is the Congress candidate. He is the former Home Secretary of Mizoram. He is contesting as a candidate for Congress. Then Rita Mal Swami, she is a singer, as I mentioned earlier. She is contesting on People's Conference seat. Then there is one independent candidate also, Mr. Changtek. So Mizoram, for lone seat, we have 5 contestants, and it is going to be interesting scene to see. We'd just like to know from you that how big is this election? India's population is more than 3 times of European Union and more than 4 times of United States. So you think that this is a massive, massive exercise? It is a model for the entire world? Yes, there's no doubt about it. See, the thing is, that's why if you see Indian Election Commission and they're conducting any elections in India, we have been invited by many countries to help them in organize elections, whether it's terms of EVM and the planning and all that. See, our election commission is in great demand. That's why. Absolutely. अब हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता, आकाशवाणी संवाददाता अपर्णा खूंट। अपर्णा जी, गुजरात में चुनाव आयोग कैसी तैयारियां कर रहा है? जी, गुजरात में जैसे आप जानते हैं सभी 26 सीटों के ऊपर एक ही चरण में 7 मई को मतदान होना है और इसके साथ साथ राज्य की 5 विधानसभा सीटों के लिए भी उसी दिन उपचुनाव होंगे। तो राज्य के 50,600 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। जहां तक चुनाव आयोग की तैयारियों की बात है तो चुनाव आयोग द्वारा अभी मतदार यादी में नए नाम दर्ज करवाने की और एपिक कार्ड के वितरण की कामगिरी चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का चुस्त पालन सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास कर रहा है। हाल ही में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत के लिए राज्य में चुनाव आयोग द्वारा एक कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है। चुनाव खर्च के देखरेख और नियंत्रण के लिए राज्य में फ्लाइंग स्क्वाड भी कार्यरत है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो चुनावी प्रक्रिया में सहभागी हो और खास करके जो युवा है वो बड़ी संख्या में मतदान करे, इसलिए काफी सारे प्रयास जन जागृति कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हैं। और गुजरात की जहां तक बात है तो गिर के जंगल या आलिया बेट, शिया बेट जैसे पानी से घिरे हुए दुर्गम इलाके हैं, उनमें रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए भी
इन इलाकों में विशिष्ट मतदान केंद्र जो है स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे कई जो है प्रबंध इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्य में किए गए हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 3 पार्टियों, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तो समझौता हो गया है, तो इन तीनों का स्टेक दांव पर है। कितने कैंडिडेट अभी तक घोषित हो चुके हैं और उनके नॉमिनेशन की क्या स्थिति है? कोई जानकारी हो तो अपडेट कीजिए। जी जहाँ तक राजकीय दलों की बात है तो सत्तारूढ़ जो भाजपा है, भाजपा ने सभी 26 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार फिर से गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और पार्टी ने इस बार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया जी को राजकोट और पोरबंदर सीट से अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। और भाजपा के जो मौजूदा अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, वो नवसारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार देखा जाए तो काफी लोग ऐसे हैं जो मौजूदा सांसद है, उनको टिकट नहीं मिली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपरा भी शामिल है। इस चुनाव में जैसे आपने बात की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हुआ है। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसके मुताबिक भरूच और भावनगर, इन 2 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की जो 24 सीटें हैं उनमें कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने अपने जो विधायक है उमेश मकवाना और चैतर वसावा, उनको भावनगर और भरूच लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में जाहिर घोषित किया है। और कांग्रेस पार्टी ने अब तक 24 में से 17 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित किए हैं, बाकी एक लिस्ट आनी बाकी है। तो अमित चावड़ा है, सुखराम राठवा है, जैसे अपने वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, उनको इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है कांग्रेस द्वारा। अपर्णा, अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था उसको भी आपने कवर किया था, अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको? जी, विकास का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है इस बार भी चुनाव में। जो पिछले 10 साल में अगर हमने देखा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी हो, मेन जो फोकस रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर रहा है। और बार बार ये जो कहा जा रहा है, जैसे कि परिवार के रूप में कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है गुजरात के विकास की, और सारे समुदाय के मतलब जो हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सिमिलरली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी अभी यही फोकस रहा होने वाला है, जो लोगों की सुविधा में हम जितने ज्यादा मतलब जी अपर्णा, समय की कमी है, आपने बहुत जानकारी दी, विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Deepak ji, a very quick comment from you. You feel that as the candidates list comes out, nominations come out, the interest becomes even heightened. Yeah, obviously, and I will not be surprised if we see more young candidates in the fray. Absolutely. Yeah. Again, we are running short of time. Deepak Devanji, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी संवाददाताओं और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग लोकसभा सीट की तय तारीख पर जिस दिन मतदान हो उस दिन मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी ये भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करेगी। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं।